So, कर लिया दिवाली के बाद का रेस्ट? Now that you are all recharged, let me welcome you to this Diwali study sesh. Episode 1, What to do on day 0. अब देखो पढ़ने का एकदम तो मन कर नहीं रहा होगा. So to combat that, let's first begin with the basics. पूरा रूम साफ करो. Okay, I kid you not. Clean every crevice and organize everything that you have in your room. Now that you've organized your room and have a clean space, let's talk the syllabus. So, हर subject का syllabus follow and look up what exactly is the syllabus for term 2. Now in this you'll have either of the two situations. या तो जो टर्म 1 में पढ़ा है प्लस कुछ नए टॉपिक्स टर्म 2 में आ रहे होंगे, या फिर टोटली डिफरेंट टॉपिक्स जो टर्म 1 में पढ़े ही नहीं है वो टर्म 2 में आ रहे होंगे. इन ईच सिलेबस मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन. ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो तुमने फिर भी टर्म 1 के लिए पढ़े थे या टर्म 1 में आए थे, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर टोटली न्यू एंड आर गोना बी अपीयरिंग फॉर टर्म 2. रीजन दैट वी सेग्रीगेटेड दीज सिलेबस इज बिकॉज नाउ जो टर्म 1 के टॉपिक्स हैं उनका एक क्वेश्चन बैंक सॉर्ट ऑफ यू विल हैव फ्रॉम द टर्म 1 पेपर्स, एंड जो टॉपिक्स नए हैं उनके लिए विल ब्रेनस्टॉर्म अ लिटिल बिट मोर टू फॉर्म द क्वेश्चंस. Now that we know what you should have studied for term 1 but have to study for term 2, let us divide the topics into how much you know about them. For this, we'll be segregating the topics into red, yellow and green columns, also called the traffic light method. So the red column has the hardest topics, matlab the topics that you have no idea about or have not touched at all. The yellow column has the topics that you have some idea about but still need to invest time to be able to get them thoroughly. And the green column has all the topics that you know either totally or just need a small revision to know totally. So with this we come to the end of day 0 of the Diwali study session. Make sure everything is done and dusted before episode 2 drops tomorrow, exactly 24 hours later. And for a small pro tip, go to the comment section. And if you like this video, comment Diya and see you tomorrow.